अब हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन बेसिकली अकर होती है ड्यू टू जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड के। अब इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, इस पिक्चर को लेते हैं। सबसे पहले ये लेट से ए पिक्चर को लेते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जी जो ये मॉलिक्यूल है, दिस हैज दीज फोर्सेस एंड द मॉलिक्यूल एट द सरफेस एक्चुअली इसके ऊपर कौन से हैं? गैस मॉलिक्यूल्स हैं। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ अट्रैक्शन। वन इज अट्रैक्शन और टुवर्ड्स द अदर वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर ओवर हेयर। सो इस वाटर मॉलिक्यूल की, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, इसकी जो अट्रैक्शन है दैट इज मोर डोमिनेंट towards the liquid molecules as compared to the molecules of the air. So it has more tendency to go inwards. That is the reason जो आप देखते हैं कि जो आपका रेन ड्रॉप है that is kind of spherical, या जब आप स्प्रे करते हैं तो उसमें से जो ड्रॉपलेट निकलते हैं वो स्फेरिकल टाइप निकलते हैं। या ब्लड को आप लेट से किसी सरफेस पर पुट करें तो आप देखेंगे कि वो सर्कुलर नहीं होता, वो एक स्फेरिकल शेप में होता है। बिकॉज उसका जो इंटरनल फोर्सेस हैं दे जो भी ड्रॉपलेट है, जो लेट से ये ब्लड का ड्रॉपलेट है, इसकी जो इंटरनल मॉलिक्यूल की तरफ फोर्स होगी इस मॉलिक्यूल की, दैट इज मोर, इट हैज मोर टेंडेंसी एज कंपेयर टू द एयर मॉलिक्यूल विच एक्चुअली प्रेजेंट आउटसाइड द सरफेस। तो खैर इस पिक्चर में अगर हम देखें तो हमें जो नजर आ रहा है कि जो ये इसकी अट्रैक्शन की जो दिस मॉलिक्यूल हैज मोर टेंडेंसी टूवर्ड्स द इनर मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड। इसकी वजह से जो अब ये फोर्स बैलेंस, बिकॉज एवरी फोर्स नीड्स टू बैलेंस इन इक्विलिब्रियम सिस्टम, तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए ये जो मॉलिक्यूल हैं ये एक रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे टूवर्ड्स आउट, और ये जो रिपल्सिव फोर्स होगी ये बेसिकली रीजन है जिसकी वजह से आप देखते हैं कि जो आपके देयर इज ग्रॉस हॉपर विच कैन actually go which can walk on the water, or you can see the needle which actually floats on the surface of the water, just like if there is water and you just place a needle on this one, so this will remain floated on the water because of this surface tension, because जो यहाँ पर fluid है it has the tendency towards inner liquids, जिसके जवाब में they have the repulsive force towards the upper side, towards the surface of the water, और जिसकी वजह से वो नीडल जो सी है वो नीडल उस फोर्स को ओवरकम नहीं कर पाती जो इस रिपल्सिव फोर्स को। तो ड्यू टू दैट एक्चुअली जो आपकी नीडल है वो फ्लोट करती रहती है सरफेस पे, और ये फिनोमेना जो कहलाता है दिस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। और इस फिनोमेना को इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, बिकॉज दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ जो ये फोर्स होती है। सो दिस इज एक्चुअली अबाउट द surface tension, and this is due to the attractive forces between the molecules of the liquid. Due to surface tension of the fluid, we have seen a very common but very interesting phenomena which is called Kepler effect. आप सब ने लैब्स में एक्सपेरिमेंट, केमिस्ट्री की लैब्स में स्पेशली एक्सपेरिमेंट करते वक्त ये वाला फिनोमेना ज़रूर देखा होगा, व्हेन द लेयर इज like this one, layer of surface of the fluid becomes this one within the tube. Why this happens? This actually occurs due to two forces of the fluid. One is cohesion, which is between you can say water and water, or you can say liquid to liquid molecules, and the other one is the adhesion, which is between liquid and solid surface.
नाउ इन वाटर यू, अगर आप वाटर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो जो आप फिनोमेना चेक करेंगे वो ये फिनोमेना होगा जिसमें आपका जो उसमें जिसमें आपकी जो कोहेशन है, दैट इज द फोर्स बिटवीन liquid and liquid is is low as compared to the force between liquid and solid surface. So in water case actually cohesion is smaller than adhesion. तो जिसकी वजह से आप जो फिनोमेना चेक करेंगे वो ये फिनोमेना होगा कि आप देखेंगे कि नाउ इन दिस जो जो यहाँ पर मॉलिक्यूल है इसके साथ फोर्स कम है, जिसकी वजह से ये बाहर की साइड से यूं होने की बजाय, मतलब ये इस तरह की शेप सरफेस डेवलप होने की बजाय दिस सरफेस बिकम्स लाइक दिस वन जो कि ओरिजिनल है, बिकॉज द फ्लूइड मॉलिक्यूल एट दिस सरफेस हैज मोर टेंडेंसी टूवर्ड्स द वॉल। जो भी मॉलिक्यूल यहाँ पर है उसकी वॉल की तरफ मोर टेंडेंसी है, जिसकी वजह से वो इधर अकर हुआ। और जबकि इनसाइड फ्लो में आप चेक करेंगे, अगर फ्लो इनसाइड द ट्यूब है तो आप देखेंगे बिकॉज इसकी टेंडेंसी जो फ्लूइड पार्टिकल यहाँ है इसकी टेंडेंसी टूवर्ड्स द वॉल इज मोर, जिसकी वजह से इसकी ये सरफेस अटेन हुई एंड इट गेट्स डिप फ्रॉम द सेंटर। ये है इंटरनल फ्लो, दिस इज इंटरनल फ्लो ऑफ वाटर एंड दिस इज इन द केस ऑफ एक्सटर्नल फ्लो, कि जब पाइप के बाहर फ्लो होगा तो वो इस तरह की शेप अटेन कर लेगा। अब जबकि हम मरकरी के केस में देखें, मरकरी यू नो दैट इन मरकरी बिकॉज विस्कोसिटी इज हाई, तो इसलिए मरकरी में हमारे पास जो कोहेशन है दैट इज कि उसकी सरफेस टू सरफेस, आपको पता है आपने देखा है कि जो मरकरी है दैट इज वेरी थिक लिक्विड, तो जिसकी वजह से उसमें कोहेशन फोर्स इज मच मोर एज कंपेयर टू एडहेशन फोर्स, जिसकी वजह से अगर पहले इंटरनल फ्लो देखें तो उसमें जो मरकरी है, अब जो पार्टिकल इधर है उसकी फ्लूइड के साथ ज़्यादा मतलब अगर फ्लूइड लेवल यहाँ पर था, ये फ्लूइड लेवल था, मैं आपको अलग यहाँ बना के दिखाता हूँ कि लेट से फ्लूइड लेवल ये है नाउ, बिकॉज इट हैज़ द फ्लूइड पार्टिकल्स ओवर हेयर हैज़ मोर टेंडेंसी टूवर्ड्स द फ्लूइड एंड लेस टेंडेंसी टूवर्ड्स द सरफेस, तो जिसकी वजह से आपके पास ये वाली सरफेस अकर हो जाएगी इंटरनली। जबकि आउटसाइड से आप देखेंगे तो आउटसाइड से भी वो बिकॉज उसकी मोर उस तरफ होने की सरफेस से लेस होने की वजह से वो ये वाली शेप अटेन कर लेगा। सो दिस इज बेसिकली दिस फिनोमेना जो कि आप देखते हैं ये मेनिस्कस, वी यूजुअली कॉल्ड दिस सरफेस एज मेनिस्कस। तो ये जो मेनिस्कस डेवलप होता है विद इन द कैपिलरी ट्यूब, दिस इज कॉल्ड बेसिकली कैपिलरी इफेक्ट। Okay ji, now let's at the end solve few questions from the exercise, just to overview of the chapter। तो पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, फिर मैं आपको कुछ टाइम दूंगा, आपने उसमें उसको आंसर देना होगा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2.2 सी इन द एक्सरसाइज, व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू द डेंसिटी। आंसर दिस क्वेश्चन। So specific gravity is basically ratio of any fluid or any body to the ratio of the water density, density ratio of any object, any body, any fluid to the density of the water।
and this is how it is actually related to the density, specific gravity. Now the next question is the find the density of wood if the specific gravity is 930. This will be very easy. Now you can find it. So this question will solve like this, that okay, now specific gravity equal to density of wood divided by density of water, which is actually 1000 at 4 degrees centigrade. So 930 equal to density of wood, which we have to find, divided by 1000. Actually this is not a realistic thing, but okay, just we take these numbers randomly. So 930 into 1000 becomes 930,000 density of the wood. This is not real actually. I just take this random value, so that's why it is like that. But the main point is to give you the concept of the specific gravity. And now the last question is, in a piping system the water temperature remains under 40 degrees centigrade. Determine the pressure allowed in the system to avoid cavitation. So solve this question. You have 1 minute. Okay ji, now if you use the table or from the internet, you can find that at the, or you can take the random value you just mentioned, that कि saturation pressure क्या है, saturation pressure of water at 40 degrees centigrade. If you find it, you will find that is 7.38 kilo Pascal. Okay, so now as I told you, you have to avoid the cavitation. In therefore it mean that कि आपने पूरे पाइप फ्लो में, मतलब इन अ पाइपिंग सिस्टम, इस पाइपिंग सिस्टम में कहीं भी फ्लो में आपने सैचुरेशन प्रेशर से बिलो प्रेशर नहीं होने देना. इन अदर वर्ड्स योर द सैचुरेशन प्रेशर, सॉरी, जो प्रेशर है that must be always greater than the saturation pressure within the flow. So therefore आपने ensure करना है कि your pressure should be greater than the 7.38 kilo Pascal in the within the piping system in order to avoid cavitation. So in this way you can avoid the cavitation happening within the पाइपिंग सिस्टम. सो ये कुछ हमारे क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व किए. बड़ा बेसिक सा चैप्टर था, फ्लूइड की प्रॉपर्टी से रिलेटेड. सो इसके साथ ही इसके सारे हमारे टॉपिक्स खत्म.